हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जावा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे पहले 1991 में फाउंड की गई थी बाय जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉगट and it is owned by Sun Microsystem from USA. By James Gosling and Patrick Nowot. प्रीवियसली जावा का नाम ओक था, OAK, ओक, for 2 years, and it was given after the name of oak tree. Then in 1995, Java was declared as web programming language. ठीक है, तो ये हमने देखा जावा कब लॉन्च हुई थी, उसका नाम पहले क्या था और उसका ओनर कौन था। अभी देखते हैं। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और एप्स जो जावा में बनते हैं। कंसोल एप्स, देन वेब एप्स, then Windows apps, mobile apps,
ये सब हम जावा में लिख सकते हैं. So Java is used for all these apps. Java is a huge language. कंसोल एप्स का मतलब लाइक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे जो दिखता है कंसोल कमांड प्रॉम्प्ट, दैट कंसोल ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम वी कैन राइट. देन विंडोज ऐप, ये कलर्ड रहते हैं लाइक नोटपैड, इट यूजेस ग्राफिक्स एंड ऑल. Then web apps like Twitter, Google, Yahoo, etc. These all are also written in Java. And mobile apps, that any mobile app which you run on Android devices are written either in Java or Kotlin. Now it is in Kotlin, but earlier Java is the popular one. Then Java is also used as a programming language for household electronic devices. And also for web programming. 20, uh, 20 billion devices run on Java all over the world. 20 plus billion actually. Okay, so this is all about Java, uh, history of Java. Now in 2010, Java was purchased by Oracle. In 2010, Java was purchased by Oracle. So it is not no more under Sun Microsystem. It is under Oracle now. Okay. So now the owner of Java is Oracle. So this is all about introduction to Java. Hope you will have liked the video. Let me know your feedback in the comment section, and do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.